Good afternoon and welcome, dear friends, to the CEC live lecture session. Today, in the subject Political Science, we will be having a series, Theories in International Politics and Overview of World History. And in this series, today we have the topic that is Causes of World War I. In this topic, we will be dealing with the three-level analysis of World War in perspective of global politics. And to discuss this topic in studios with us, we have Dr. Sujit Thakur. Dr. Thakur is an assistant professor in Dayal Singh College, Delhi University. Friends, I would remind you that regarding this lecture, if you have any questions and queries, you can call us in the last 10 minutes of this lecture on our toll-free number. And our toll-free number is 1800110430. Now, I won't waste any further time and would request Dr. Thakur to continue with the lecture. Welcome to the studio, sir. Yeah, good afternoon and viewers. Today we are going to once again discuss the overview of the world history. And as all of you know, in the last sessions we discussed about the Russian Revolution and the overall development of the Russian society and the polity of the last 100 years. Today we are going to discuss why the Great War took place in the 1914 and what were the major factors that led to the Great War that involved almost 32 countries. On the one side there were 28 countries, another side there were 4 countries, and all the great powers of the European state systems fought against each other, and it would almost 6.5 crore people were mobilized to fight against each other, and 10 million people died and 20 million people wounded in this war. And it would reshape the world history of the world, and it created a number of new nation states, and it also given the rise of the nationalism and other fundamental changes what we witnessed in the 20th century. So, we all have been going through this literature of the World War I, and we have studied number of regions that why the World War I took place in 1914, where we studied about the immediate cause, then we studied about the regions of the redistributions of the power, then we studied about the great power rivalry. But today, when we are going to discuss this topic, keeping in the mind of the perspective of the international relation, and as a student of the global politics, we are going to analyze this topic in the 3 perspectives. Basically, as all of you know, when we started studying about the international politics, there are 3 levels of analysis, and in the international politics played a very important role in understanding the international relations and international politics. Therefore, when we try to explain the World War I, here we once again trying to understand the World War I through this level of analysis. Number 1 level of analysis, we try to analyze the World War I through individual level. When we talk about the individual level, that means the outlook of political leaders at the time, because see, in the international politics, even if we go through the theoretical propositions of the previous lectures, where we always tell that, see, the political leaders played a very important role in determining the world politics. Equally, at the World War I, when we started understanding about the regions of the World War I, we understood that number of world leaders at that time, whether it was William Caesar of the German Emperor, or it was the removal of the Ottoman Bismarck in the 1890s, or the Ottoman Empire defense minister Pasha, they all played a very important role in deciding in leading this kind of world war in 1914. But prior to going to discuss all these things, we first try to understand what are the levels. So, at the second level, when we try to understand, that is the unit level, that claim that certain states were ambitious and aggressive. When we try to use that unit level, means
One side we are going to analyze how the political leaders and emperors, generals, they played an important role in leading to the war. Another level, what we are going to understand at the state level, how the state acted in a certain circumstances, and their over ambitions and aggressions how led to this devastating war. And then we are going to analyze at the systematic level, means how the structure of the world politics that determine the World War I, where we are going to discuss about, see, from 1861 to 1906, what we witnessed that there were exponential growth in the industrial and military capability of the Germany. Other side, what we also witnessed that the US already replaced as a hegemonic military and economic power of the Europe, and due to the isolation policy of the US foreign policy, they never ever indulged themselves in the global politics, but they started playing a very the people started considering, the state started considering that US is one of the important player in the world politics. And moreover, when we started analyzing about the structure or the systematic level analysis of the World War I, then we also understand that see the way we try to understand see the Archduke Ferdinand assassinations led to the First World War. That is the very simplistic understanding of the World War. But when we started analyzing about the systematic level, then we understood it's not the just a Balkan War, or it's just a Serbian nationals assassinated the Archduke Ferdinand and the World War took place. There are a number of other factors that played a very important role that led to the First World War. Here, when we are going to start analyzing about the World War I, then we started analyzing in 1815, when the Vienna Congress or the Concert of Europe took place in the Vienna, and the number of coalitions forces like Austria, Great Britain, German, Prussia, and other important player of the European state systems, they started making such kind of policies which would never create imbalance of power in the European state systems, and they tried to prepare three kind of policies. You see, the world war, another war, European state system would not take place, and the number one was the balance of power systems, and that played a very important role from 1815 to 1914, that avoided any major war in the European state system. The number of war took place between 1815 to 1914, but it avoided where every other states would get involved, and this balance of power played a very important role. But after 1819, when the Kaiser William took a control on the German empire or German state systems, his over aggressive and hard negotiation style played a very negative role in creating imbalance among the states, and that led to the Great War. So, in this lectures, we are going to analyze all these issues, what factors led to the World War. So, here we have confined our lectures on the three level of analysis. One, how the individual leaders started playing a very important role. Another, the state behaviors. And third, the systematic changes happened in the 19th century and how it led to the World War I. यहाँ पर जब हम इस लेक्चर्स की व्याख्या करने जा रहे हैं कि विश्व युद्ध क्यों हुआ, तो विश्व युद्ध वन के बारे में जिससे हम पहले ग्रेट वार के रूप में जानते थे, और जब तक सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं हुआ था, जब तक द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ था, तब तक यह ग्रेट वार के रूप में जाना जाता था। और इतनी भयावह यह युद्ध था जिसमें उस समय के कम से कम 32 राज्यों ने भागीदारी की थी, और जितने महत्वपूर्ण राष्ट्रराज व्यवस्था था, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे ओटोमन एम्पायर हो, चाहे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर हो, चाहे बुल्गारिया हो, जितने भी उस समय के महत्वपूर्ण स्टेट सिस्टम थे, चाहे यूएसए हो,
सब ने कहीं न कहीं इसमें अपनी भागीदारी की थी और 6.5 करोड़ से अधिक सेना को मोबिलाइज किया गया था और जिसमें कि आपने देखा कि 2 करोड़ से अधिक लोग विंडेड हुए थे और 1 करोड़ से अधिक सेना मारे गए थे। इस तरह का विभत्स वार पहले दुनिया कभी देखी नहीं थी। यह वार क्यों हुआ, यह युद्ध क्यों हुआ? जब इसका हम एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के छात्र के रूप में व्याख्या करने की कोशिश करते हैं या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय के रूप में इसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, तो मुख्य रूप से हम इसका व्याख्या 3 स्तर पर करने का प्रयास करते हैं। पहला स्तर हमारा यह है कि इंडिविजुअल लेवल, मीन्स व्यक्तिगत राजनेताओं की क्या भूमिका थी, जनरल्स की क्या, जनरल्स जो थे उस समय उनकी, सेनाध्यक्षों की क्या भूमिका थी, या उस समय के जो मीडिया के जो राइटिंग्स थी उसकी क्या भूमिका थी, उसने किस प्रकार के राजनीति को या किस प्रकार के वातावरण को देश में व्याप्त करवाया, इसकी क्या भूमिका रही, इसकी हम मुख्य रूप से चर्चा करते हैं। जब व्यक्तिगत की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि 1871 में जब जर्मनी का एकीकरण हुआ और उसमें ओटोमन बिस्मार्क की बहुत बड़ी भूमिका थी और 1890 तक जब तक बिस्मार्क वहाँ पर चांसलर बने रहे, एक प्रकार का जर्मन स्टेट का काफ़ी आधुनिकीकरण हुआ, औद्योगिक रूप से, सैन्य रूप से, लेकिन उनकी जो नीति रही वो एग्रेसिव नहीं थी, एक प्रकार का कोई रीअलाइनमेंट की नीति थी। लेकिन 1890 के बाद जब कैसर विलियम सत्ता में आता है और वो बिस्मार्क को पदच्युत करता है या बिस्मार्क की जगह दूसरे को चांसलर बनाता है, उसके बाद से जर्मन साम्राज्य की जो रणनीति थी वो यह हो गया कि यूरोपियन राष्ट्रराज व्यवस्था में जर्मन अपने आप को एक इम्पेरर, यूरोप में एक इम्पेरर के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि जो भी बिस्मार्क की जो नीति थी वह कहीं न कहीं पीछे हो गई और जो भी उसके रीअलाइनमेंट का जो अप्रोच था उसके कारण जो चाहे रसिया हो, चाहे इटली हो, चाहे अदर स्टेट पावर्स हो जिनके साथ एक प्रकार का ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था, या तो उनके साथ जो गठबंधन था वो गठबंधन भी टूटते चला गया और नए नए गठबंधन का इजाद होते चले गया। तो कहते हैं कि विश्व युद्ध में उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनिट लेवल एनालिसिस में विशेषकर जो राज्य की जो आकांक्षाएं थी, उनकी जो महत्ता थी, उसकी क्या भूमिका रही। उस समय जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस जो 2 महत्वपूर्ण शक्तियां थी, अमेरिका भी एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रहा था और जर्मनी एक महत्वपूर्ण शक्ति उभर चुका था, इटली का भी यूनिफिकेशन हो चुका था और इटली भी एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर चुका था, साथ ही साथ जापान का भी एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उदय हो चुका था। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जब इस रूप में हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस समय की जो विश्व व्यवस्था थी जिसमें जर्मनी, इटली नए राष्ट्र राज्य के रूप में उदय हुए थे और जर्मनी का विशेषकर जो औद्योगिक और सैन्य क्षमता थी वो काफ़ी विस्तृत हो चुका था और उस समय की जो महत्वपूर्ण ताकतें थी खासकर यूरोपियन राष्ट्र राज्य व्यवस्था में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, वह अपना दबदबा पूरी विश्व व्यवस्था पर बनाए हुए था, उसको किसी न किसी रूप में चुनौती देने का प्रयास जर्मनी कर रहा था। साथ ही साथ इटली भी अपनी दबी आकांक्षाओं को आगे लाने की कोशिश कर रहा था। उसी प्रकार से एशिया में भी जापान का जो मिलिटरिज्म व्यवस्था थी, जो सैन्यशाही व्यवस्था थी, वह भी कहीं न कहीं अपनी आकांक्षाओं को आगे करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर यूएसए भले ही आइसोलेशन की पॉलिसी, अपने आप को अलग थलग रखने की नीति पर काम कर रहा था और अमेरिका को मजबूत करने की स्थिति में उसकी आजमाइश ज़्यादा थी, लेकिन वह भी कहीं न कहीं विश्व व्यवस्था पर अपनी एक भूमिका चाहता था। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार से राष्ट्र राज्य व्यवस्था उस समय नए रूप में वैश्विक समुदाय के सामने आ रही थी और ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस का जो दबदबा था वो कहीं न कहीं विश्व व्यवस्था को असंतुलित कर रहा था और जो राष्ट्र राज्य अपने आप को मजबूत स्थिति में पा रहे थे वह अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते थे। यह भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक हुआ विश्व युद्ध में। तीसरे स्तर पर जो हम एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं वो एनालिसिस है संरचनात्मक स्तर पर कि आखिर परिवर्तन क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो जब हम विश्व संरचना की जब चर्चा करते हैं तो स्पष्ट रूप से इसमें भूमिका पूरी की पूरी 100 वर्षों के इतिहास का हम आकलन करते हैं। खास करके जो कंसर्ट ऑफ यूरोप जो हुआ था, जिसको हम वियना कांग्रेस के रूप में जानते हैं, जो 1815 में जो घटना घटी थी, जिसके तहत एक शक्ति संतुलन के सिद्धांत को अमली जामा पहनाया गया था और 1799 से लेकर 1815 तक जो यूरोपियन राष्ट्र राज्य व्यवस्था में फ्रांस नेपोलियन वन के कारण जो 15-16 साल तक लगातार युद्ध की स्थिति बनी रही और नेपोलियन की जो सपना था कि वो एक होली रोमन एम्पायर पुनः स्थापित करके यूरोप में पूरी अपनी व्यवस्था या सत्ता स्थापित करना चाहता था, उसके विरुद्ध जो एक कोएलिशन बना ऑस्ट्रिया का, ग्रेट ब्रिटेन का, रसिया का, प्रसिया का, जर्मनी का,
उन राज्यों ने यह सुनिश्चित किया कि इस प्रकार की स्थिति यूरोपियन राष्ट्र राज्य व्यवस्था में पुनः न आए। उसके लिए उन्होंने एक शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम का की स्थापना की और यह निर्धारित किया कि कोई भी राज्य यदि आक्रामक स्थिति में अपने आप को दूसरे राज्य के प्रभुता को क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है या उसकी आक्रमण करता है तो दूसरी सत्ता एक साथ एकत्रित होकर उसको काउंटर करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने यह कोशिश की कि खास करके जो फ्रांस में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके बाद जो राष्ट्रवाद का एक और लोकतंत्र की और समानता की जो बातें काफ़ी व्यापक रूप में देखने को मिली थी खासकर 19वीं सेंचुरी में, उसके कारण उनको लगा कि जो राष्ट्र राज्य व्यवस्था है जिसमें एक इम्पेरर सिस्टम था, जो राजशाही व्यवस्था थी, तो उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो परंपरागत सत्ता व्यवस्था है, उसको भी चुनौती दी जा रही है। तो इस प्रकार का पुनः जो समानता शून्यता के नाम पर या लोकतंत्र के नाम पर अराजकता की स्थिति ना उत्पन्न हो, उसको भी कंटेन किया जाए। और तीसरी उसने ये कोशिश की कि जो कंसर्ट ऑफ यूरोप के माध्यम से कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न रहे जिसमें कि फिर इस तरह के युद्ध की स्थिति ना हो और कोई राज्य जो है अपने आप को इतना ताकतवर ना हो जाए ताकि वो दूसरे की सत्ता को चुनौती दे सके। तो इस स्थिति को देखते हुए हम जो वर्ल्ड वॉर I की जब व्याख्या करने की कोशिश करते तो हम देखते हैं कि एक तो हमने इंडिविजुअल लेवल विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा राष्ट्र राज्य के रूप में कोशिश कर रहे हैं, तीसरा हम सूचना की स्थिति में देख रहे हैं जिसको 1815 से लेकर 1914 के बीच जितनी भी घटनाएं घटी, चाहे वो 1861 में इटली का एकीकरण की बात हो या 1871 में जर्मनी के एकीकरण की बात हो या फिर 1890 के बाद विलियम कैसर की जो भूमिका रही राष्ट्र वैश्विक संरचना को बदलने की, तमाम चर्चाओं को हम जो ग्लोबल सिस्टमेटिक एनालिसिस है उसके तहत हम व्याख्या करने की कोशिश करेंगे और इसके तहत हम अपने विचारों को आगे रखने की कोशिश करते रहेंगे। सेकंड स्लाइड में हम देखते हैं किसी why this kind of situation prevailed, where these states who agreed in 1815 that the European state system would not go or would not face another war, but suddenly after 1861 or 1871 when the Franco-Prussian War took place and after the unifications of the Germany and unification of the Italy and after the William Kaiser took as a emperor of the Germany, how the system started accepting that war is inevitable and the problem of the redistribution of power would only can be resolved through the might or through the war, and the state and the individual level, state level and the structural level people started justifying the war is inevitable, and if you want to survive, if you want to expand your territory, if you want to command at the world level, you will have to be stronger, you will have to fight for your right. So why this kind of thinking, why this kind of mindset started prevailing in the 19th century and the 20th century? Here, when we try to analyze theoretically, then we understood that the social Darwinism played a very important role in justification of the war. They said it argued that a process of competitions and struggle among human beings determine who survived. These views were associated with unfettered capitalism and were used to justify the war as a means of state survival. See, here the two things people started accepting that. You see, if you want to survive, the human struggle is the natural phenomena of the human being, and if you are not ready to struggle for your survival, then there would be no any escape for you to survive in this world. Equally, that led to the understanding that, see, if you want to promote the capitalism, unrestricted capitalism, they started telling, see, if you want to gain the colonial territory, then you will have to fight.
then and if you have to fight, then whom you have to fight? Those who have already command on the resources. So that time the Great Britain and the France had most of the places they have occupations on the colonial territory, and Germany wanted to redistributions of the territory. So what we understood theoretically, the social Darwinism also promoted this kind of thinking in the mindset of the European society or in the European media and European state system, where they wanted to promote unrestrained capitalism, and for this unrestrained capitalism they wanted a surplus land, they wanted a surplus chief labor, they wanted all these things, and for all these things they have to fight against those who have a command on the resources. So what we took it, Germany started challenging the might of the Great Britain and the France, and in 1815 what the understanding was, you see, whenever anyone would start challenging the world peace, other power would start clubbing together and contain that. But this social Darwinism prevailed among all the other states, and this kind of mindset developed among the European society that, see, if we will have to expand ourselves, we will have to understand कि we will have to fight for our survival. यहाँ पर पुनः हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस प्रकार की व्यवस्था, विश्व व्यवस्था क्यों सामने आई, जहाँ यूरोपियन समाज ये स्वीकार करने लगा कि यदि हमें सरवाइव करना है, यदि हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो हमें युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा, हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। तो ये चार्ल्स डार्विन का एक सिद्धांत था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसमें वो कहता था कि यदि आप में शक्ति है तभी आप जीने के लायक हैं, यदि आप में नहीं है तो कोई न कोई आपको रिप्लेस करेगा ही करेगा। तो यह जो एक सिद्धांत था जो 18th-19th सेंचुरी में प्रिवेल कर रहा था यूरोपियन सोसाइटी में, इसको खास करके पूंजीवाद के विस्तार के बाद इस तरह की जो सोच है उसको और आगे मान्यता मिलने लगी, और ये कहा जाने लगा कि यदि आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि शांति के साथ ही आपका विस्तार हो सकता है या शांति के साथ ही आपका प्रगति हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यह नेचुरल लॉ के विरुद्ध है। यदि आप प्राकृतिक नियम को भी मानने के लिए तैयार हैं, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि यदि आप यदि संघर्ष नहीं करेंगे तो आप जो है सुरक्षित संरक्षित नहीं रह सकते। और इस बात को लेकर जो उस समय का जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, जो उस समय का जो साम्राज्यवादी व्यवस्था थी, जो अपने क्षेत्रों का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहती थी और सस्ते पूंजी, सस्ता लेबर, साथ ही साथ अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहती थी, वह इस बात पर जोर देने लगी कि यदि किसी राज्य को अपने क्षेत्रों का विस्तार करना है तो उसके लिए युद्ध करने के लिए उसे तैयार होना चाहिए, और जब तक वह युद्ध नहीं करेगा तब तक उसके राज्य का विस्तार नहीं हो सकता। तो यह जो एक सोच थी, तो कहीं न कहीं पूरे यूरोपियन राष्ट्र राज्य व्यवस्था में हर राज्यों के बीच कहीं न कहीं इस तरह की सोच विकसित हो चुकी थी, और हर कोई जो है पूंजीवादी व्यवस्था के कारण इस सोच को स्वीकार करने लगा था कि इफ यू वांट टू सर्वाइव यू विल हैव टू स्ट्रगल, यू विल हैव टू फाइट, एंड इट गिवन द जस्टिफिकेशन टू द वॉर। और ये युद्ध को जो है न्यायोचित मानने लगा, और यह सोच जो है वो आगे होती चली गई, और यह विश्व व्यवस्था की स्थिति में विश्व युद्ध करवाने में बहुत ही मददगार सिद्ध हुई। थर्ड स्लाइड जो हम देखते हैं उसको वी आर गोइंग टू एनालाइज इन detail why the World War took place in the 1914 and how the individual level analysis played a very important role in deciding the World War I. Here what we try to analyze, at individual level the focus was on the role of the individual leaders, generals, media and others. What I have said, you can see the William Kessler played a very important role in leading the World War I. Then we also try to understand the field to understand the impact of nationalism, public opinion, industrializations and technology, and they did not know how to cope with them. And the third, what we try to understand the immediate cause of the war was assassinations of the Archduke Francis Ferdinand, the heir of the throne of Austro-Hungary by Serbian nationals. And fourth, we try to understand the Kessler-Williams over ambitions and hard styles of negotiations. See, the fourth point we here try to analyze it, you see,
the individual leaders, generals, and the media and others started playing a very important role in leading to the First World War. Here, when we started analyzing, we see that the leader, whether it was the Russian Empire, whether it's the Ottoman, whether it was Austro-Hungarian, whether it's a German, whether it's the Britishers, whether the French, they would unable to understand the impact of the nationalism, because see, after 1789, when the French Revolution took place, from 1789 to 98, what we witnessed that this liberty, fraternity, and equality became a buzzword across the European society, and everywhere the self-determination right started playing a very important role. That led to the Balkan Wars, that led to the that led to the also unifications of the Germany, and we also saw that number of new state systems emerge in the European state systems. And even in the previous lectures, when we started analyzing about the Bolshevik revolutions, then we understood after a concert of the Europe in 1815, where they contained the nationalism, but in 1830 the July Revolution took place. In 1848 there was a spring of nations took place. Then what we saw it in 1861 on the nationalism, Italy integrated. Then 1871 the French integrated. Then due to the Slavic nationalism, the Russian Empire was so compelled to support the Serbian national. So, and Ottoman Empire also started losing its might and in the Central Europe and the Danube regions. So, what we try to communicate through this thing, see, whatever the development took place in the 19th century, the leader of the great powers would unable to understand the impact of the nationalism and the public opinion, industrialization, because what I have also told you, from 1861 to 1906, in the last 40 years, the unprecedented growth the Germany witnessed in the industrializations and the technological development and the military might. And another side, the Japanese also witnessed that they also their militarism and the major restorations also made them very stronger power across the Europe. So the leader of the France, Great Britain, who were dominating that time in the European state system and the world system, they were unable to understand the impact of the industrializations and technological development took place in the other part of the world. And another side, what we witnessed that the whole 19th century, what we witnessed, despite the containment of the French Revolution and concept of the Europe, where all the great powers decided that we have to not allow the rise of the nationalism. Despite in some form it played a very important role in changing the nation state system in the European society, and we saw it in the Balkan War, the Grecian state system development, and then even in the Middle East, where the number of state systems would develop. So keeping all these things in mind, what we try to understand at the individual level also, which all played a very important role. But we are going to discuss all these things after the post-break session. Thank you, sir, for this session. Dear friends, we will be staying here for a short break. I will join you after a short break. But before that, I would remind you that if you have any calls or if you have any questions or queries, you can call us on our toll-free number, that is 1800-110-430. So, we will be coming back after a really short break.
Welcome back, friends. We'll be starting with the topic Causes of World War I. I would request sir to please continue with the topic. So please. Thank you. Once again, we have to restart with the individual level analysis, where I started talking about the individual leaders started also playing a very important role, because they would unable to understand the impact of the nationalism going on in the 19th century, then the changing industrialization of the different country and integrations of the Italy and Germany, and then the leaders of our hostile environment across the European systems. They all played a very important role, and these leaders were unable to understand, and they started deliberately or indirectly or indirectly to these all the issues, keeping in the mind of their own ambitious natures. And so we keep all these things in the mind when we started analyzing about the individual level analysis of the World War I. कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम विश्व युद्ध की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, खास करके इंडिविजुअल लेवल पर, तो हम देखते हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो व्यापक परिवर्तन हुआ, खासकर 19वीं शताब्दी में जब व्यापक परिवर्तन हुआ राष्ट्रवाद को लेकर, तो 1815 में वियना के कांग्रेस में एक बहुत बड़ी बात यह जो वहाँ उस समय की जो महाशक्तियाँ थी, उसने निर्धारित किया कि फ्रांस की क्रांति के कारण जो परिवर्तन हुए हैं राष्ट्रवाद को लेकर, उसके कारण कहीं न कहीं एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है राष्ट्रराज व्यवस्था में, और कहीं न कहीं जो स्थापित सत्ता है उसको चुनौती देने का कोशिश हो रहा है। तो उसको किसी रूप में बढ़ावा ना दिया जाए, इसको लेकर तमाम जो उस समय के शासन व्यवस्था थी उसमें एक सहमति थी। लेकिन किसी न किसी रूप में हमने देखा कि चाहे 1815 के बाद 1830 हो, चाहे 1848 हो, चाहे 1861 हो, चाहे 1871 हो, या ऐसे पीरियड्स थे जहां राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्रराज का एकीकरण हुआ, वहाँ पर नई नई व्यवस्थाओं के लिए आंदोलन हुए। 1830 और 1838 में खासकर जुलाई रिवॉल्यूशन और स्प्रिंग ऑफ नेशंस को तो दबा दिया गया, लेकिन 1861 में इटली में एकीकरण होता है और इटली एक महान शक्ति के रूप में उभरती है। 1871 में जर्मनी का एकीकरण होता है और वह भी एक महान शक्ति के रूप में उभरता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि ओटोमन एम्पायर में भी राष्ट्रवाद के कारण उसकी शक्तियां बिखरते चली जा रही थी। ऑस्ट्रिया हंगेरियन साम्राज्य जो कि एक मल्टीनेशनल साम्राज्य था, वहां पर भी तमाम प्रकार की समस्याएं सामने उत्पन्न हो रही थी। तो कहीं न कहीं यह देखने को मिला कि उस समय का जो शासक वर्ग था, वह जो राष्ट्रवाद को लेकर औद्योगिकरण के कारण, तकनीकी परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन हो रहे थे, उस परिवर्तन को समझने में नाकाम रहा। और जब ये एक स्थिति आई, जब आर्कड्यूक फर्नांडिस और उसकी पत्नी को जो ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य था, और खासकर पहले वो ओटोमन एम्पायर के कब्जे में था, बोस्निया और हंगरी, बाद में ऑस्ट्रिया हंगरी के कंट्रोल में आया, वहाँ जब उसकी हत्या हुई तो वह एक माचिस का काम किया। खास करके जो बाल्कन वार 1 और बाल्कन वार 2 में जो ओटोमन एम्पायर का जो एक तरह से वहाँ पर पतन हुआ था और उसके पास जो स्पेस खाली हुआ था, उसको ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर उसको भरना चाहती थी। और स्लोवाक नेशनलिज्म के नाम पर रशियन एम्पायर का भी कहीं न कहीं वहाँ पर अपनी एक सोच थी कि वो अपनी सत्ता को स्थापित करे। और साथ ही साथ जर्मन एम्पायर जो जर्मन एथनिक लोग थे, वो जो वहाँ पर कहीं न कहीं जर्मनी को लगता था कि जो जर्मन एथनिसिटी के जो लोग हैं ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर में, वहाँ पर उनका दबदबा रहे। तो ये जो तमाम फैक्टर्स थे वो एक बहुत बड़ी भूमिका निर्वाह किया, खास करके फर्स्ट वर्ल्ड वार को तेज करने में। न कि केवल आर्कड्यूक फर्नांडिस की हत्या, फ्रांसिस फर्नांडिस की हत्या ही विश्व युद्ध को जन्म देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि केवल यह कहना कि ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का जो युवराज था और उसकी पत्नी की हत्या किसी एक सर्बियन नेशनल्स के द्वारा हो जाने के कारण ही विश्व युद्ध हुआ, वह अपने आप को विश्व युद्ध को समझने में नाकाफी है। वस्तुतः यदि विश्व युद्ध को समझना है और व्यक्तिगत कारण के कारण भी समझना है, तो इसके लिए कई सारे बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं जो विश्व युद्ध को बढ़ावा देता है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर था यूनिट लेवल एनालिसिस। Here we try to understand to see how the state started playing a very important role in leading to the World War I. Here what we witnessed that the aggressive state argument, Germany started war to stop Russia from becoming too powerful, allowed Austria-Hungary to do what it wished to Serbia. German Chancellor Theobald admitted that Germany had fought a preventive war, German colonial ambitions and desire to become a world power. See, here what we try to understand. See, number of state players have their own ambitions. What I have said it, Ottoman Empire had ambitions to regain their territory in the Balkan areas.
The Austro-Hungarian Empire had the ambitions to regain and re-strengthen its territory of the multi-ethnic nations. Russian Empire had ambitions when it lost the war in the Japan in 1905 to regain the faith of their peoples. Then the Germany had ambitions to become a great power of the Europe. France had ambitions to regain the Lorraine Alsace provinces from the Germany, which he lost in 1871. Great Britain had ambitions to regain the to contain the Germany. So every states had their own point of argument, and every state became so aggressive and ambitious to contain other states. So when we started analyzing about the World War I, we understood that all the great power had their own interest. Russia had their own interest to expand their territory, and it would unable to contain the Slovak nationalism. Other side, what we witnessed that due to the rapid industrialization, the militarizations of the German army and over ambitions of the Kaiser William II, Germany started inviting their all the old allies, because 1882 when the Triple Alliance formed, Russia was the part of the Triple Alliance, Italy was the part of the Triple Alliance, then Austro-Hungary Empire was the part of the Triple Alliance. But after 1890, what we witnessed that due to the hard negotiation style, the William Kaiser would not sign once again the Imperial League with the Russia, and their behavior started threatening the Russia, and the Russia would become a part of the Triple Entente later on to contain the Germany. And then due to the weakness of the Austrian-Hungary Empire, Germany started providing all kind of support to the Russia, to the Austria-Hungary, and Russia started playing a very active role in providing the all kind of support, systematic support to the Slovak nationals. So one side, what we witnessed that in the late 19th century and the first half of the 20th century, one side the Ottoman Empire started losing its territory, Austria-Hungary Empire facing all kind of problem to re-strengthen itself, Russian Empire lost the credibility, and the France was in favor to create such kind of imbalance where they can contain the Germany and also regain their Franco-Alliance places. So it's all led to the First World War. So it's not the one factor, there are number of factors that played a very important role at the state level. यहाँ पर जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो जो उस समय का जो राष्ट्र व्यवस्था थी, खासकर रसिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, सबकी अपनी अपनी सोच थी, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस जो था उस समय सबसे बड़े शक्तिशाली राष्ट्र थे। 1871 में जब जर्मन फ्रैंको वार हुआ था तो उस समय जो फ्रांस का जो एलिस लॉरेन का जो एरिया था वो जर्मनी के कब्जे में आ गया था, और फ्रांस कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि वो उसके सत्ता में कैसे वापस आए। उधर जो 1905 में जापान के साथ जो हार हुई थी रसिया की, उसके कारण रसिया जो है और वहाँ पर जो नेशनलिज्म को लेकर खास करके वहाँ जो मूवमेंट चले आ रहे थे उसको वो कंटेन करना चाहता था अपनी सत्ता स्थापित करके। तीसरी तरफ हम देख रहे थे कि ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर जो था, जो डुअल इम्पेरियल सिस्टम के कारण वहाँ पर वैसे ही कमजोरी थी, और मल्टी एथनिक सोसाइटी थी, मल्टीनेशनल सोसाइटी थी वहाँ पर, वो अपनी स्थिति को कमजोर करने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए चाह रहा था कि कैसी व्यवस्था हो जहाँ उसे मौका मिले कि वो अपनी सत्ता को रिगेन कर सके। तो तमाम तरह से हम देख रहे थे कि हर राष्ट्र आज व्यवस्था जो थी, उस समय जो साम्राज्यवादी व्यवस्था थी वो कहीं न कहीं इस स्थिति में था कि उसे मौका मिले और वह मौका का फायदा उठाकर अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। परिणाम ये हुआ कि हर कोई अपनी मौका के खोज में विश्व व्यवस्था को एक युद्ध की तरफ धकेलते चला गया, और हर स्टेट जो है कहीं न कहीं किसी प्रकार के नेगोशिएशंस करने से इनकार कर रहा था, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी अपने आप में क्वेश्चनेबल थी। और यह ऐसा रीजन हुआ जिसको कि जो जर्मनी का जो कॉलोनियल एम्बिशंस था, और खासकर विलियम कैसर का जो हार्ड नेगोशिएटिंग स्टाइल था, इसको और आगे बढ़ाया, और जो कि विश्व युद्ध को जन्म देने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ।
इसी में हम कंटिन्यूस जब करते हैं तो कहते हैं जर्मन इंटेंसिफाइंग नेशनलिज्म लेड टू क्लाइमेट ऑफ हॉस्टिलिटी, वीक स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्ट्रियन हंगरी एंड रशियन एम्पायर कॉज टू द वार, इट्स नेशनल डाइवर्सिटी, डिमांड फॉर स्लाव सब्जेक्ट. It's the same points what we try to understand. See, the Slovak nationalism, the Austro-Hungarian Empire, though there was a single imperial system, but there was a dual system in the Austria and Hungary, and then the Russian Empire support to the Slovak nationalism. It all led to the Second World War, and it all played a very important role. And over nationalism across the European systems created such kind of climate where every state is suspecting the other state's interest, and that led to the, if any state wanted to negotiations, the people would become anti to emperor or the system. So no state would dare to play role of negotiators, and it all led to the war. कहने का अर्थ हुआ कि उस समय की जो स्थिति थी, खास करके जो अति राष्ट्रवाद के कारण और खास करके जो मल्टी एथनिक स्टेट्स के कमजोरी के कारण ये स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी कि कोई भी जो राष्ट्रराज व्यवस्था था वह यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार नहीं था कि वह एक मीडिएटर का रोल करे, क्योंकि जो भी मीडिएटर की रोल करता वहाँ पर ये स्थिति उत्पन्न हो रही थी कि जो चरम राष्ट्रवाद था वह यह समझने लगा था कि यदि आप किसी प्रकार का नेगोशिएशन करते हैं तो कहीं न कहीं वो आपकी कमजोरी मानती, और उस समय में अति राष्ट्रवाद से उसकी सत्ता को खतरा था, जिसके कारण जो है कोई भी राष्ट्रराज व्यवस्था यह खतरा लेने के लिए तैयार नहीं था. Now we have to here understand, see, we understood the two perspective. Here the third perspective, the Marxist-Leninist perspective, because it also started analyzing about the why the World War took place. Here the Lenin, in his essay Imperialism, the Last Stage of Capitalism, argued that as strains within the capitalist systems grew, these societies sought to ease social tensions by overseas economic imperialism and acquisitions of colonies that could provide raw materials, cheap labors, outlets for surplus capitals, investment and market for exports. Imperial latecomers like Germany and the US and Japan became aggressive when they found that how little the British and French left for them. Well, you see, the Marxist analysis is very easy to understand. What the Marxists try to tell us, you see, why the World War took place. They said, you see, it was basically a competition of the imperialist power, because see, the France and Britain captured most of the colonial areas, and when the German and Russia and the Japan became a most powerful state systems in the Europe and the America and the Asia, they started redistributions of the resources. But the France and Great Britain would not ready to concede the demand of the Germany and the US and the Japan. So obviously every state wanted soft cheap labor, every state wanted expansions of their territory, every state wanted the surplus capital should be invested in that area, and that would not possible as long as they would not fight. So they said it was the war when the due to the profit of the margin would get stagnated in all these states, and if they would have to increase their profit, then they would have to fight the war. So the war took place. Then another analysis they said, see, the Marxists believed that that time industrializations that produces the number of arms and arsenals by these companies like Germany's group, Sinders, Creusot in France, Bikers in the Britain, Skoda in the Australia, Hungary, and they described that, see, these companies morally promoted because they wanted to sell their arms and arsenals, and as long as the war would not take place, who would purchase the arms and arsenals? So they created such kind of hostility among the different states that every state wanted to arming themselves, and therefore they said these companies are the merchants of death, because they wanted more and profit, they wanted more and more arm sale to their to gain their more and more profit, and that led to the World War
वन। यहाँ पर जब हम यूनिट लेवल पर एनालिसिस करते हैं तो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि ये जो पूरी की पूरी लड़ाई थी विश्व युद्ध का, यह बेसिकली साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच थी, क्योंकि साम्राज्यवादी शक्तियों के पास जो सत्ता थी उसमें उनके पास जो सरप्लस कैपिटल्स था उसको एग्जॉस्ट करने के लिए, उसको इन्वेस्ट करने के लिए उनको जगह चाहिए थी, और जो जगह था वो बस मैक्सिमम ग्रेट ब्रिटेन के पास था और फ्रांस के पास था। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस जो था उस समय की जो और शक्तिशाली सत्ता सामने आई, खास करके यूएसए का, जर्मनी का और जापान का, उसके साथ जो कॉलोनियल टेरिटरी थी उसको रिडिस्ट्रीब्यूट के लिए तैयार नहीं था, और जर्मनी इसके लिए रेस्टलेस होते जा रहा था, और जापान भी एशिया में रेस्टलेस होते जा रहा था। इसलिए वो मांग कर रहा था कि भाई जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, और जर्मनी का खास करके जो औद्योगिकरण और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो था वो कहीं ना कहीं ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को चुनौती दे रहा था, और जर्मनी एक प्रकार से एक यूरोप में एक मजबूत सत्ता के रूप में उभर चुका था, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे। इसलिए मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पर्सपेक्टिव का ये कहना है कि यह बेसिकली एक साम्राज्यवादी युद्ध था, और यह युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि अब अधिक से अधिक प्रॉफिट गेन कैसे हो, तो प्रॉफिट गेन का जो रास्ता था वो बंद हो चुका था, इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए यह युद्ध हुआ, जो कि लेनिन का जो थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म है उसमें वो स्पष्ट रूप से इस बात को रखता है। साथ ही साथ वो कहता है कि उस समय जो कंपनियां थी, खास आर्म्स प्रोड्यूसर जो कंपनियां थी, चाहे वो फ्रांस का हो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन का हो, चाहे ऑस्ट्रिया हंगरी का हो, इनकी एक उद्देश्य था कि किसी तरह से आर्म्स को बेचा जाए, चाहे किसी को भी बेचा जाए, किसी भी कंट्री को बेचा जाए। इसलिए वो कहता है कि ये मर्चेंट्स ऑफ डेथ थे। तो कहते हैं कि एक फैक्टर नहीं था, देयर आर नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स दैट प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द वर्ल्ड वॉर वन। Now the role of nationalism, they also try to tell us, see the role of nationalism also played a very important role in creating the war. They try to tell us, see, across the Europe there was a hostile atmosphere due to this Slavic nationalism, Austrian Hungary, Russian nationalism, and they all played a very major role in leading to the World War I, because see, if you see the Balkan War I and Balkan War II, just due to the Slav nationalism, and they got succession from the Ottoman Empire. Then after the Austro-Hungarian grabbed the power, and they then again once again they challenged the Austro-Hungarian Empire, and the Russians started supporting the Slav nationalism. Then the French nationalism demanded the lost provinces of Alsace and Lorraine. Then the German nationalism wanted to establish a greater Germany. So they try to tell us, see, the role of nationalism also played a very important role इन क्रिएटिंग द वर्ल्ड वार। कहने का अर्थ हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में जो राष्ट्रवाद की समस्या थी, चाहे जर्मन नेशनलिज्म का हो, चाहे रशियन नेशनलिज्म का हो, चाहे स्लाव नेशनलिज्म का हो, चाहे ऑटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशंस का हो, चाहे ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर के कमजोर होने की बात हो, ये सब जो है राष्ट्रवाद की जो डिमांड बढ़ रहा था, उसके कारण जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो बात हो रही थी, आप निर्णय का जो अधिकार हो रहा था, और नए नए राष्ट्र राज्य की जो स्थापना के लिए जो युद्ध हो रहे थे किसी न किसी रूप में, वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक रहा प्रथम विश्व युद्ध में, और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। नाउ वी आर गोइंग टू come on the final explanations of the global system level explanations. What here they try to tell us, you see, the proper explanations of global level is that the World War I was result of demand of redistribution of resources and power. Growing German military and industrial might created a security dilemma for Britain, France and Russia. And retreat of Ottoman Turkey from the Balkans produced a power vacuum in the region that both Russia and Austro-Hungarian Empire wished to fill. And here what we try to understand, you see, what is the global level analysis? Here the three factors they are trying to tell us that played a very important role in understanding the World War I. They are trying to tell us, you see, the demand for the redistributions of the power and the resources. What I have said it, from 1816 to 1906, the German industrial and economic growth was exponential, and German became one of the great power of the Europe, and they started challenging the might of the France and the Great Britain. And another side, the Great Britain and France were not ready to concede the demand of the Germany. Another side, what I have said it, you see, the USA also emerged as one of the major power in the world. If we understood the new Marxist explanations of the William Wallerstein, William Wallerstein already said it in 1873. Officially, the USA replaced the British hegemony, but
due to the policy of isolations, USA would never ever play a very active role in the world politics. Even at the World War I time, if you witnessed that, the USA only intervened after the 3 years of the war in 1917, and that changed the complete structures of the World War I, where in the initial year what we witnessed that the Germany was winning, but later on after the interventions of the USA, the Germany started getting defeated. Equally, what we witnessed that as long as from 1870 to 1819, the Ottoman Bismarck was the Chancellor of the Germany. He would ensure that no country of the European state systems would face any kind of threat from the Germany's rise or unifications. So, he signed an Imperial League with the Austro-Hungary Empire. Then he also signed a reinsurance treaty with the Russia. Then he also tried, his main policy was to isolate the France rather than to create enemy across the Europe. So, his policy was very much successful, and he was quite successful in even satisfying the Austro-Hungary Empire and the Russian Empire and Ottoman Empire, and they said, see, we are not going to create any kind of redistributions of the resources after getting this kind of success in the industrial and military term. But after 1890, due to the over ambitions of the Kaiser William and the hard negotiation style of the Germany, the whole structure and whole the perceptions regarding the Germany was changed, and Russia also started facing threat from the Germany, and the way Germany started demanding and started dominating in the European state systems and its policy, the Britain and France and Russia started facing security dilemma, and this security dilemma led to formations of the Triple Entente, whether Britain, France and Russia became one of the major partner, and the Triple Alliance, where earlier the Russia was the partner in 1882, it defected from the Germany and it became a partner of the Britain, France. But earlier the Germany's intention was mainly to contain the France, but due to the replacement of the Ottoman Bismarck, the Germany became isolated. However, due to this industrial might of the Germany, later on when the Balkan War I took place in 1908, and where the Ottoman Empire started losing its territory, and 1913 when Ottoman Empire retreated itself and the Austro-Hungary Empire started replacing the Ottoman Empire back home place, and the Russia started also playing a very important role. A fierce psychosis started playing a very important role, and this localized war later on turned out to be a World War I, because what we witnessed that, you see, Russian could not contain itself because there was a Slavic nationalism, and nationalism were across the Europe on the rise, and no country could dare to contain themselves. So, the Tsar Nicholas was also forced to become a party of the and supporter of the Serbia, and other side the Ottoman Empire wanted to regain that territory. France wanted to regain the Alsace, and Britain wanted to re-strengthen its position. So, it all created an atmosphere where despite knowingly and unknowingly, these all led to a great war that created a lot of problem across the world civilizations. So, when we overall trying to analyze about the systematic and structured level, then we must recall like Kenneth Wa's structure analysis, where he said, you see, it's not the state, it's not the individual leaders, it's the structures that force the state to fight against each other. And in the World War I, when we saw it, it was not the only individual, it was the atmosphere and the structure. The nationalism created such a hostile environment across the world, where no state leaders would dare to say that we don't want war. Other side, the over industrializations and the arms race led to the security dilemma. And third side, what we witnessed that the
the structure of the world, where the Britain and France started played a very important role in the 18th and 19th century, got challenged from the USA, Germany, and Japan, and these all created such kind of situations where others would not have any other options than it would lead to a great war. कहने का अर्थ हुआ कि आपने जब देखा कि तमाम प्रकार की जो समस्याएं हुई, खास करके रसिया, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तो ये देखने को मिलता है कि जब संरचनात्मक स्तर पर हम विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस, जिसकी 18वीं और 19वीं शताब्दी में एक बोलबाला था, वह किसी न किसी रूप में 19वीं शताब्दी के अंत आते आते जर्मनी, यूएसए और जापान के द्वारा कहीं न कहीं चुनौती दी जा रही थी। लेकिन उसमें सबसे अधिक भूमिका थी वो जर्मनी की थी। लेकिन 1870 के इंटीग्रेशंस के बाद 1890 तक जो जर्मनी की भूमिका थी वो रीअलाइनमेंट की थी, फ्रांस को अलग थलग करने की थी। लेकिन 1890 के बाद जो जर्मनी का जो एक एम्बिशंस था विलियम कैसर के द्वारा, वो ओवर एम्बिशंस का था। वहीं पर रसिया का जो स्थिति थी वो अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। वहीं ओटोमन एम्पायर जो खासकर सेंट्रल यूरोप में एक मजबूत ताकत के रूप में था, चाहे वो ग्रीस हो, चाहे वो चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, इस तरह के जो कंट्रीज थे, वहाँ पर वो अपने आप को मजबूत स्थिति में था। वो वहाँ पर अपनी टेरिटरी हारते जा रहा था और साथ साथ सीरिया, इराक, इस समय भी नेशनलिज्म की को लेकर आंदोलन चल रहे थे। तो ओटोमन एम्पायर अपने आप को रिगेन करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ 1908 में जो वहाँ यंग टर्क पाशा के द्वारा जो आंदोलन हो रहे थे, उससे भी टर्की एम्पायर पर कहीं न कहीं खतरा था। उधर ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर जो था वह भी डुअल एम्पायर सिस्टम था, मल्टी एथनिक सोसाइटी थी, मल्टी नेशनल सोसाइटी थी, वहाँ उसकी अलग कमजोरी थी। तो ये तमाम फैक्टर जो थे कहीं न कहीं इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर दी थी कि कोई राज्य यदि चाह भी रहा था कि नेगोशिएटर की भूमिका का निर्वाह करे तो वह नहीं कर पा रहा था। इन तमाम कारणों को हम जब विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि यह प्रथम विश्व युद्ध जो था उसमें कोई एक कारक नहीं, कई अन्य कारक थे जो प्रथम विश्व युद्ध में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए। इसलिए हम कंक्लूजन में कहते हैं, इन कंक्लूजन वन कैन से दैट रीजंस फॉर द वर्ल्ड वॉर can be attributed to numerous reinforcing causes at each level of analysis of international politics. However, no single explanation is sufficient to uncover the causes. Several prominent theoretical explanations exist to explain the causes of the war, but every theoretical explanation is not suffice in itself to explain the war. So, overall, what we try to understand is not the one and two factors. There are a number of factors and there are a number of other theoretical explanations, but not single explanations or single theoretical explanations would explain the overall understanding for the causes of the war. Every causes are the effect of the other causes, and it led to the Great War after the 100 years of the peace in the Europe, consort of Europe. Thank you. Thank you, sir. So friends, this was a very informational lecture, and we at CEC are always available for you with such informational and educative lectures. So stay tuned with us. Thank you.